Guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. I am doing good too, and we are sitting right in front of a big window, so this is daylight, and I wanted to come here and talk to you guys about a product that has been going viral in the Indian market. Is this brush from Mars. This is their 4-in-1 travel brush, and who better know the difficulty of carrying brushes while traveling than me, because for the past few months, if you know me already, I've been traveling, in and about. So when this product came in, I did not sit on it because I knew the moment anything Mars launches, everything just goes viral and then it goes out of stock. Like the same thing happened with the lip liners. I still don't have it in my hand. Now the video is not about that, the video is about this. So this is how the outer packaging looks like. Now they usually have an inaugural offer, like some percentage discount, so I picked it up with that discount, and this is how it looks like. I told you already. And this is how the inner packaging looks like. This slides off, so if you want you can save both of it. And this is how the brush looks like. Oh my god, this is not too heavy. It's still weighted. It's not like too lightweight and cheap, but it's not heavy as well. So this is how it looks like. You get a flat top kabuki brush, and oh my god, the bristles are like so freaking soft. Where is this made at? It's in made in PRC is what they've mentioned, and the price of this is 449 rupees. But for sure, I know I didn't get it at that price. I got it at discounted price. So really happy about the bristles. Like, look at the bristles. It's like so soft, and yeah, I'm doing a pull test and it's not coming out, so that's great. So what I'm going to do, I am barefaced, but I have done my skin prep. I've applied the primer. Now we need to do our base product, eye products, falana, damkana, and all of that. So we're going to do that in this video, and we are going to be using this particular brush to do everything. And let's see how the look turns out and whether this will suffice for me or not. So let's do that. I'm not gonna list every bit of the product. You can see it in the description box and then decide for yourself. Now before you guys come at me, yes, this foundation is dark, it's not my shade, but that's how I like it, so adjust. And I am going to be using this flat side of the brush. So when I keep my hand, you can see it's flat, but it's slightly like a dome shape. It's not like chapku flat, it has slight dome in it. So I'm using the brush. Oh my god, the brush is very soft, like damn soft. Now bear in mind that this brushes are made for travel purposes. So if you are expecting like a lot, like a full bridal makeup to be done by this brush, I'm sorry, you must be मिस्टेकन. दिस इज़ अ ट्रैवल ब्रश, एंड जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम लोग पूरा फेस नहीं करते. जितना भी हम कैरी कर लेना, लाइक नो मैटर हाउ मच वी कैरी, हम लोग पूरा फेस नहीं करते हैं. एट द मोस्ट हम कंसीलर करते हैं, थोड़ा सा ब्लश लगाते हैं, थोड़े पाउडर्स लगाते हैं, थोड़ा सा आई शेडो कर लेते हैं कभी कभी, एंड दैट्स अबाउट इट. बट हम पूरा फेस नहीं करते. तो अगर आप उस पर्पज़ से ले रहे हैं कि आप पूरा एक ग्लैम मेकअप लुक या पार्टी लुक करोगे, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा. ये नहीं बोल रही हूँ कि काम मैनेज कर लोगे अगर आप प्रोफेशनल हो, बट आपको और ज़्यादा टूल्स चाहिए हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. अ ब्यूटिफुल फिनिश, एज यू कैन सी स्ट्रीक्स नहीं छोड़े. दिस इज़ नॉट अ फुल कवरेज फाउंडेशन. तो अगर आप ब्रश को कंप्लेन करोगे कि उसने फुल कवरेज नहीं दिया, तो देन अगेन आई हैव टू ब्लेम यू एंड नॉट द ब्रश. तो या, फाउंडेशन लुक्स फ्लॉलेस. इट्स सिटिंग फ्लॉलेस ऑन माई स्किन. अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि मेरे पास एक पूरा सेट भी है. रुको मैं दिखा देती हूँ. उसका ओरिजिनल सेट जो उन्होंने फर्स्ट ब्रशेस जो लॉन्च किए थे वो यही थे. मेरे पास सेट ऑलमोस्ट 1 साल से पड़ा है. अब मैं वीडियो इसके बाद ही बना दूँगी, और साइड बाय साइड कंपेयर करके भी आपको एक वीडियो बना दूँगी इफ़ यू वांट दैट एज वेल. तो आई कैन डू बोथ ऑफ इट. आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज दिस ब्रश इज़ गुड. सो नाउ आई एम एक्साइटेड कि मैं उस ब्रश सेट को भी ट्राई करूँ एंड आपको बताऊँ कि कौन सा आपको लेना चाहिए. आपको ये लेना चाहिए, आपको वो लेना चाहिए, या फिर आप दोनों भी ले सकते हो, या ऑल दैट आई विल टेल यू. यूज़ द कंसीलर.
फॉर कंसीलर एज वेल मैं सेम ही ब्रश यूज़ करूँगी, लाइक द सेम साइड ऑफ द ब्रश. जब मैं बोल रही हूँ कि ब्रश अच्छा है, मैं बोल रही हूँ ये साइड ऑफ द ब्रश अच्छा है, बिकॉज बाकी अभी तो हम स्टार्ट किए हैं वीडियो एंड यूज़ नहीं किए हैं. राइट, तो मैंने कर लिया है. अभी लेट्स सेट माई फेस विथ द पाउडर, एंड फॉर पाउडर वी विल यूज़ दिस साइड ऑफ द डोम, काइंड ऑफ this side the taper dome shaped brush, and set it over here. ये बताया कि this is really good for your powder applications and all of that. Yet again this brush is super soft, बहुत सॉफ्ट है. इसका शेप परफेक्ट है कि आप अपने आइज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो. आप इससे पाउडर ब्लशेस लगा सकते हो, पाउडर ब्रॉन्जर्स, कॉन्टोर्स, वो सब यूज़ कर सकते हो. सो रियली लाइक इट. मैं सिर्फ अपना टी जोन सेट कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स वेयर आई प्राइमरली स्वेट, एंड that's where I get oily as well. और ये साइड आप पाउडर्स के लिए यूज़ करो, वरना आपके पाउडर्स एंड क्रीम्स मिक्स होके ब्रश के ब्रिसल्स ख़राब होंगे और आपका एप्लीकेशन भी ठीक से नहीं होगा. तो मैं ब्लश के लिए भी यही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, एंड टिप पे मैंने ले रखा है, एंड आई एम प्लेसिंग इट, एंड यू कैन सी इट्स वर्किंग एज अ मल्टीपर्पज़ ब्रश. प्रोडक्ट अच्छे से पिक हो रहा है, अच्छे से प्लेस हो रहा है. कैन यू सी दिस इज़ विदाउट ब्लश एंड दिस इज़ विथ ब्लश, एंड आई एम सीइंग माई मिरर टाइम एंड अगेन, एंड इट्स वर्किंग रियली गुड. सो ये फाउंडेशन ब्रश को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, एंड आई गिव इट अ बिग थम्स अप. हाउ आई विल डू माई मेकअप. तो मैं वही मेकअप कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए. इनफैक्ट यू गाइस, this part of the brush is like so damn good, like literally very good. आप सब जगह पाउडर देखोगे, बिकॉज मैं हूँ और फजीती ना करूँ, मतलब पसारा ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रश एंड द मिस्ट्री रिवील इज़ दैट आपको ऐसे ट्विस्ट करना होता है. आपको यहाँ पे एक ब्रश मिल जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर आई शेडो एप्लीकेशन, and then if you twist it you will get another brush. So this is a perfect shaped brush. It's not too big, it's not too small, it's perfect to do your eye makeup. and यहाँ पे उन्होंने एक flat brush दे रखा है, but ये flat brush totally flat नहीं है. you can see इसमें अभी भी fluff है. Like this will be perfect for your nose contour, it will be perfect for your inner corners, and it will be perfect for blending your eyeshadow, like detailed blending of your eyeshadow. Also it will be good for your glitters. So it opens up like this. इसके दो पुर्जे निकल जाते हैं, एंड फिर आप इस पार्ट को आई शेडो के लिए यूज़ कर सकते हो, विच इज़ not a very small brush as well, and not a very big brush as well. Remember, we are on a vacation. तो मैंने ये फ्लफ़ी साइड ले रखा है, ये शेड ले रखा है, एंड जस्ट ब्लेंडिंग इट ऑन माई आईज एंड जस्ट मेकिंग अ वेरी नाइस simple kind of an eye makeup look, nothing fancy, just adding some color on my eyes, that's all. And the grip on this is not bad, it's comfortable grip because ये वाला part, you know, this part is thick, तो आप आराम से पकड़ पा रहे हो, तो it is very good in grip. क्या करूँगी ना, I will take this particular shade on this brush which was flat but yet fluffy. I'm gonna take it and I'm gonna just place it like that just on my lash line. Can you see I've just placed it on my lash line to kind of give a winged effect. Extremely soft, तो ये आइज पे पोक ही नहीं हो रहा है, and it is easy to use. Doing the same thing on this eye as well and creating a slight wing.
Alright, you guys, I'm done with my full face of makeup, and can you tell that I did the whole face with just one brush? So I feel that this is a worth product. बट आप ये वाला जो एप्लीकेशन ब्रश है ना, तो इससे आप आईब्रोज भी कर सकते हो। ये वाला यूज़ करती हूँ ना, पेंसिल, टू डू माई आईब्रोज, तो मुझे ये वाला पार्ट यूज़ करने की ज़रूरत, एंगल ब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, दिस साइड आप ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन, एनी क्रीम प्रोडक्ट्स, दिस साइड यू कैन यूज़ फॉर ऑल योर पाउडर प्रोडक्ट्स। अंदर आपको दो अच्छे खासे ब्रशेज़ मिल रहे हैं, एंड quality of the brushes is amazing, it's beyond what I expected। तो मैं तो बहुत enjoy कर रही हूँ। आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि आपका पर्पस सर्व कर रहा है, अगर आप ट्रैवल के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो दिस विल बी द मोस्ट परफेक्ट brush that you can carry। and I thought I'll do summer makeup, and literally मैंने glam makeup कर लिया है। I can do this glam makeup and go also with just this brush, so I really love it। आप देख लो, अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो एंड आपको लगता है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, तो आप इसको पिक कर लेना एंड आप रिग्रेट नहीं करोगे। मैं तो नहीं कर रही, आई एम सो हैप्पी विद दिस परचेज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। तो आप अगर कुछ भी चाहिए वीडियो वाइज, या फिर आपको कोई डाउट्स है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू क्लियर इट विथ यू गाइज। एंड विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन यू गाइज टेक केयर, स्टे सेफ।